Good morning, ma'am. Good morning. Okay. Okay, so let's start. लास्ट क्लास में हमने प्रॉब्लम्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स पढ़ा था। मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हैं, आप लोग देख लीजिएगा मूडल पे। ठीक है। इसके पहले वाले जो टॉपिक है थर्ड यूनिट में आपका रोल ऑफ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, उनके नोट्स उनके लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं मूडल पे। आप लोग वो देख लेना, 3 लेक्चर्स हैं। ठीक है। हम आज रोल ऑफ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे। अब डेवलपमेंट दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। जो भी ऑर्गेनाइजेशंस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। ठीक है। एक है रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस, जो रूल्स रेगुलेशंस से कंसर्न होते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, उनको इम्प्लीमेंट करना, वो रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है। एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर क्रिएटेड so that they can support, they can boost, they can help the entrepreneurs. ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प करने के लिए या उनको डेवलप करने के लिए बनाए जाते हैं। ओके। तो हमें ये 4 डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ने हैं। रेगुलेशन फर्स्ट इज खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, एमपी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, शेड्यूल्ड बैंक्स एंड एमपी महिला आर्थिक विकास निगम. So we'll start with Khadi and Village Industries Commission. Okay. So basically जो भी इंडस्ट्रीज हैंडक्राफ्ट या handicraft, cottage industries, all kinds of industries related to hand woven cloth. खादी क्या होता है सबको पता है। खादी इज अ हैंड वोवन क्लॉथ जिसका धागा भी हाथ से बुनकर बनाया जाता है और उसके कपड़े को भी हाथ से बुना जाता है, हैंडलूम पे बुना जाता है। ओके। सो खादी वाज समथिंग दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, फ्रीडम स्ट्रगल, और उसे इंडिया की एसेंस के साथ काउंट किया जाता है. सो दिस this commission, this department was established specially so that khadi and related industries, जो villages में छोटे आर्टिस्ट या आर्टिजन्स काम करते थे या सामान बनाते थे, उन कंपनीज को या उन आर्टिस्ट को सपोर्ट करने के लिए दिस कमीशन वाज क्रिएटेड. Now what are the functions or main objectives of this commission? ये है मेन फंक्शन, असिस्टेंस एंड एडवाइस और कंसल्टेशन. Okay, so first is assistance and advice. So every kind of assistance and advice or consultation is offered by Khadi and Village Industries Commission to the entrepreneurs. Okay, अब इसमें assistance किस किस तरह का हो सकता है? It can be financial assistance, technical assistance, advice, for the development of small scale industries. For expansion of the commission, central government as well as the nationalized banks have been granting loans to the needy. The commission endeavors to solve the problem of small scale industries and give advice to them through the medium of existing boards situated in different states. Okay. The next one is training program. For imparting proper training to the workers and supervisors, 10 divisional or department training centers and 16 institutional training centers are managed by the commission. So first function was that the commission provides assistance and advisory facility to the entrepreneurs. The second one is that they also provide the required training to workers and to the supervisors of these industries, these cottage industries, these small industries or handicraft industries. Okay. So any kind of training
that may be required by the employees, by the entrepreneur, related to any kind of handicraft, any kind of production of such handicrafts is provided in these training centers. Okay. Then next is distribution programs. So Khadi and Village Industries Commission also help in the distribution of these products, especially khadi. So you may have seen that there are khadi bandars established in every almost every city in the country. हमारे जबलपुर में भी एक खादी भंडार है. खादी भंडार बेसिकली इज अ सेल डिपो, एक शॉप जिसमें खादी एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स या हैंडमेड प्रोडक्ट्स, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स सेल कर जाते हैं. So the commission plays a major role to ensure the products of the small scale industries should reach the market countrywide. For this purpose, the commission has set up 10 Khadi Gram Udyog Bhavans and nearly 14,000 Khadi Bhandar sale depots. Apart from this, assistance is provided for sales and marketing of the product. Okay. Then next is research. So research is uh, investment in the improvement of the product. Okay. जैसे खादी है, खादी या हैंडीक्राफ्ट में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं. जैसे पहले खादी का क्वालिटी उतना बेहतर नहीं होता था, बट नाउ न्यू ट्रेंड्स आर कमिंग अप विद खादी प्रोडक्ट्स, खादी क्लॉथ. खादी इज यूज्ड इन production of commercial kurtas and dresses. Okay. Plus now they are also printing khadi with digital printing. Okay. So ये एक नया innovation है in खादी प्रोडक्शन. सो सिमिलरली हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे बास्केट्स, बैग्स आउट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स. ओके. These researches are also funded and supported by the Khadi and Village Industries Commission. Then next, other functions include disposal of problems of small and entrepreneurs and offer consultation and counseling. So disposal of problems means any kind of issues that may arise in their enterprise. This commission helps them to overcome that. To approve and sanction the new schemes presented by the State Khadi and Village Industries Board and other institutions. So time to time government अलग-अलग तरह की schemes लाती है for these kind of entrepreneurs and for these kind of handicraft workers and artists. So विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल कि वो जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं या जो डिजर्विंग ऑन्टरप्रेन्योर्स हैं उनको रेकमेंड करें फॉर गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ दीज स्कीम्स. देन टू इंट्रस्ट the responsibility of preparation of new designs to National Design Institute. So National Design Institute, or this is the National Institute of Design, not National Design Institute. So NID is an institute just like IITs and IIMs are specialized in educating and training engineers and managers. Similarly, NID is specialized in educating and training people related to the design industry. Okay, it may be related to any kind of handicraft, any kind of um, textile designing, interior designing, all kinds of design aspects are taught here. Okay. So new courses, new kind of training programs are created here in NID with the help of in Khadi and Village Industries Commission. Then next is to organize the fashion shows with a view to increase the popularity of khadi clothes.
So they also organized fashion shows from time to time, so that khadi clothes, whatever are being produced and whatever innovations are being made, unko showcase kar sake. Okay. And then next we come to the schemes that are being run by these khadi and village industries commission. So we do not need to study the entire detail of the scheme. We should just know the outline of what the scheme says and what its purpose is. Okay. So under this scheme, it is mainly for backward classes or scheduled caste people, for entrepreneurs, sculptors, artisans, and they are provided with modern appliances and implements. Under this scheme, 90% of the capital loan or maximum 13,500. Now this figure keeps on changing. Okay, it keeps on updating as years pass by. Okay, so you can remember that usually 90% of the capital up to 13,000, almost approximately 13,000, they provide. Okay, by way of subsidy is given, and the balance 10% of the working capital is made available to the banks. Now when here they have mentioned that the balance 10% is given through banks. So why have they divided this is that whenever an entrepreneur applies for a loan, उसे कभी भी 100% फंडिंग नहीं मिलती, कभी भी किसी entrepreneur को 100% फाइनेंस नहीं दिया जाता. ओके. इवन कभी अगर मैं बिजनेस के लिए लोन लेने भी जाऊं बैंक में, तो दे विल आस्क मी फॉर सम कोलैटरल सिक्योरिटी और कम सम काइंड ऑफ asset that they can keep as a guarantee with them in case I am not able to repay my loan. Okay, so that is called margin money. Okay, so 90%, up to 90%, 95%, maximum 98% funding is provided, but it is never 100%. The remaining percentage is usually considered as the margin money or the contribution of the owner, the entrepreneur. Okay. Yeah, before I forget, please write your attendance in the chat box. Then margin amount scheme. The second scheme is the margin amount scheme. So in under this scheme, financial assistance is provided for amount of up to 1 lakh rupees. Okay. And cases amounting to over 1 lakh will be considered on the basis of the project report study. If the project is deserving enough, they can even provide loan of more than margin money loan of more than 1 lakh, but only for deserving candidates. Okay. Then here the board pays up to 25% margin money loan free of interest. Now this is very important. This commission provides interest free loan to entrepreneurs in the case where the amount involved is up to 10 lakhs. In case where the amount exceeds 10 lakh rupees, the eligibility for interest free margin money is 10%. Okay, these points you have to remember. Next, we come to the eligibility. You can see the eligibility to secure the assistance under the scheme. So, what are the eligibility criteria? We'll see quickly. Mm. So, all the aspiring entrepreneurs can derive the benefits of the various schemes of board who intend setting up businesses in the rural areas whose population is less than 10,000. So, people who set up their factories or industries in rural areas or backward areas where population is very less, or where much of development has not taken place, the government favors such
entrepreneurs, and they are given subsidies in the form of zero interest loans or low price for land that they are using. Okay, and whose proposed units fall under the purview of district industries center. So basis for securing benefits of the board scheme, it is necessary to comply with the following conditions for obtaining the benefits of the scheme under references. Uh, the age of the applicant should be more than 18 years and less than 45 years. Okay, so this is the age criteria or the age limit for whom the um, benefits are provided. Okay, then intending to set up industries approved by the Khadi and Village Industries Commission. Now this is very important. Only those industries would be funded or provided benefit under this scheme uh, which whose product or the kind of industry is approved by the Khadi and Village Industries Commission. Okay, the fixed capital investment per artisan should not exceed 50,000. So they are basically focusing on establishing small scale entrepreneurs, छोटे आर्टिजन्स, छोटे entrepreneurs को ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए ये कमीशन बनाया गया था. एंड लास्टली, the applicant should not have obtained the subsidy benefit under any other scheme of the government. किसी और स्कीम में उसको पहले से बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए. एक पर्सन को सिर्फ एक ही स्कीम का बेनिफिट मिलता है. ओके, सो दैट मैक्सिमम पीपल कैन बी प्रोवाइडेड बेनिफिट्स. नेक्स्ट हम आते हैं एमपी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की टॉपिक पे. दिस इज द सेकंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. ओके, now the second for providing financial assistance to small scale and medium scale industries at the state level, State Financial Corporation Act was enacted in September 1951. As a result, all the state governments were empowered to establish the financial corporations in their respective states. Presently, 18 financial corporations are operating in our country. So you do not need to remember all of this. You should remember the establishment date, sorry, the year. Here in the next page, you can see when it was established. The MP Financial Corporation was set up on 30th June 1955. And here you can see in this connection, any unit desirous of setting up the following industries can avail the financial assistance. So these are the industries that are approved under the MP Financial Corporation schemes. So production or manufacture of any item, processing of goods, preservatory processes, etc. Then mining, hotel industry, purchase of suitable vehicles for transport by road or sea, then generation of electricity and distribution. So do you all know that the distribution of electricity in our city as well is in the hands of a private organization? Okay, so MPB gives the distribution rights to a private firm which uh, which is responsible for distributing the electricity. The production of electricity and the management is under the MPB. Then assembly, repairing and packing jobs for machines, electricity is used in maintenance, servicing, testing, repairing industry, then land development, fisheries or fishing industries, then providing technical service conductive of industrial development, establishment of hospitals and nursing homes, etc. Okay, so these are some of the examples whose under which the MP Financial Corporation provides the funding. The nature of financial assistance provided by the corporation. So basic
corporation basic assistances are, first is land and development of land. तो loans जो provide किए जाते हैं under this corporation are basically for these purposes. Okay, first is land and development of land. तो लैंड खरीदने या रेंट पे लेने के लिए या उस पर कुछ कंस्ट्रक्शन करने के लिए, वो कंस्ट्रक्शन वुड बी मान लो माइनिंग किया या लैंड को एग्रीकल्चर के लिए डेवलप किया. फिर बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन अलग आ जाता है, बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड. देन फॉर प्लांट एंड मशीनरी, सो परचेज और लीज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी. देन यहाँ पे तो ये चीज़ क्लियर दिख नहीं रही है, आप लोग ये लिख लीजिए, मैं बता देती हूँ. प्रिलिमिनरी एंड द इनिशियल एक्सपेंसेस फॉर establishment of utilities, sorry, units. Okay, preliminary and initial expenses also are funded. Then and next is miscellaneous expenses और लास्ट है incidental expenses. So ऐसे expenses, ये all these 3 points are concerned with the expenses that an entrepreneur may face. Okay, so in expenses may be preliminary, means at the time of setting up of the business. Then miscellaneous expenses या ऐसे expenses जो during the course of work arise होते हैं. And lastly incidental, जो emergency या sudden cases में arise हो जाते हैं. Then limits of loan क्या है? Up to 30 lakhs of the ordinary units and 60 lakhs to limited companies. Okay, so up to 30 lakhs for ordinary units and अगर लिमिटेड कंपनी एस्टैब्लिश्ड है या कोऑपरेटिव सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड है तो 60 लाख तक लोन मिल सकता है. देन the corporation also grants loans in coordination with the other institutes like the banks, All India Financial Institution and the Madhya Pradesh State Industrial Development Corporation. तो इनके साथ मिलके भी वो लोन स्कीम्स ऑपरेट करते हैं. Now next we come to the scheduled banks. Scheduled banks basically सारे बैंक्स दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एक शेड्यूल्ड और एक नॉन शेड्यूल्ड. अब शेड्यूल्ड बैंक्स का डेफिनेशन अगर मैं बोलूँ तो दे आर द बैंक्स दैट हैव बीन लिस्टेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई. सो द सेकंड शेड्यूल वाज गिवन इन द ईयर 1934 और इस शेड्यूल में जो भी बैंक्स लिस्टेड हैं ये सारे एग्जाम्पल्स हैं ऑफ द बैंक्स दैट आर लिस्टेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई. दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ शेड्यूल्ड बैंक्स. ओके, बैंक्स के बारे में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम जो भी डिटेल्स हैं वो हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट यूनिट में वैसे डिटेल्स में पढ़ेंगे. तो इसलिए हम यहाँ पर बहुत ही विल जस्ट टेक एन ओवरव्यू ऑफ इट. ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं आप देख लीजिए यहाँ पे. फॉर ऑब्टेनिंग द लोन, डॉक्यूमेंट और प्रोसेस, प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है जिसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं. ये वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमने अभी तक सिक्योर किए हैं, जैसे प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, कॉपी ऑफ रेंट और लीज डीड, बायोडेटा, फिर जो बिल्डिंग में हम बिजनेस करने वाले हैं उसकी अप्रूवल की कॉपी, then description of production process, detailed estimate of cost, description of machinery. Okay, so these are the documents that have to be submitted in order to get the benefit of loans etc. under scheduled banks. Okay, and lastly we have MP Arthik Mahila Arthik Vikas Nigam. Now this, as the name suggests, it was established basically to support women entrepreneurs. महिला उद्यमिता को
सपोर्ट करने के लिए इसको बनाया गया था. So the establishment date you can see 31st October 1998, and is dedicated for the economic development of women of the state. Following are the chief objectives. So what are the chief objectives you need to study? Yeah. Operations or different schemes for encouragement of women entrepreneurs. तो टाइम टू टाइम जो भी स्कीम्स आती हैं वो क्रिएट करते हैं एंड रन करते हैं उन स्कीम्स को फॉर वुमेन entrepreneurs. To cooperate, assist and guide women entrepreneurs to establish new industry or self-employment. Okay, so women entrepreneurs को establishment में और self-employed होने में भी help करते हैं. Help and cooperate in marketing and distribution of products manufactured by the women entrepreneurs. For helping the women to manage and run different business by providing them margin money and grants. Help the women for selection of the business unit as also to help them in the preparation of the relevant model project report. सो प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्रिएशन में जैसे नए एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको नहीं पता होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट किस तरह से फ्रेम करनी है, किस तरह बनानी है. सो दे हेल्प देम इन क्रिएटिंग द प्रोजेक्ट रिपोर्ट. देन टू ऑर्गेनाइज exhibitions and fairs for popularizing the product manufactured by women. Okay. Now, these are some of the schemes that they operate. So they organize a mela, Mamta Mela, in under which all the women entrepreneurs are given an opportunity कि आप आके अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर शोकेस कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, so that people get to know about your products. Then ये ग्राम्य योजना also is run by महिला आर्थिक विकास निगम. ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड वर्किंग कैपिटल टू रूरल ऑन्टरप्रेन्योर, टू रूरल वुमेन ऑन्टरप्रेन्योर्स ऑफ मध्य प्रदेश. ओके, सो रूरल एरियाज में जो वुमेन ऑन्टरप्रेन्योर्स हैं उनको वर्किंग कैपिटल लोन्स प्रोवाइड करते हैं. आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि कैपिटल दो तरह का होता है, एक वर्किंग कैपिटल, एक फिक्स कैपिटल. सो वर्किंग कैपिटल लोन्स को फंड करते हैं. देन अब लोन्स का अगर हम देखें तो असिस्टेंस और लोन रीपेमेंट में भी उनको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं या बहुत लीनियंसी प्रोवाइड की जाती है ताकि वो easily loan repayment कर सकें. The repayment of loan is commenced 1 month after the payment of loan. Okay. Then self-help groups will repay the loan in 12 monthly installments. तो साल भर में वो मंथली इंस्टॉलमेंट में लोन रीपे कर सकते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जो पार्ट्स हैं. देन the recovery process of from the members of the self-help group is initiated by the group as and when warranted. So जब required होता है recovery process initiate किया जाता है and they are provided whatever help they need. And the loan amount recovery collection will be deposited in the amount of district Mahila and Child Welfare Officer through the project officer. Okay. So these are some of the schemes that are run by the Mahila Arthik Vikas Nigam. So today we studied 4 development organizations. Please just read through whatever we have studied today. And if there are any questions, you can ask me in the group or you can message me. अभी किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं. इस यूनिट में ज़्यादा कुछ समझने के लिए नहीं है. जो स्कीम्स चल रही हैं बस वही आपको पता होना चाहिए. ओके, जो करंट स्कीम्स चल रही हैं कंट्री में या स्पेशली हमारे स्टेट में
उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो इसमें कुछ समझने वाली ज़्यादा चीज़ नहीं है, यू जस्ट नीड टू मेमोराइज सम ऑफ द पॉइंट्स एज आई सेड। ओके, सब कुछ नहीं याद करना है, बट आप एक बार रीड कर लेंगे तो यू विल गेट दी बेसिक आइडिया। चलिए ठीक है, सो विल स्टॉप हियर टुडे। थैंक यू गर्ल्स।